So we will start with Harshwardhan. Once you are ready, timer, you can go ahead to Harshwardhan. Yes, sir. Start. Start. Good evening, everyone. Today's topic of my lecture is India's foreign policy. The foreign policy of India started from the independence in the year 1947. The first phase of the Indian foreign policy was regarded as a Nehruvian phase, wherein it lasted till the year 1962 and had more of the idealistic approach. There was a very big change in India's foreign policy in the year 1962 after the India-China war, wherein post-war there was a much increase in the defense procurements, investments, and focused more on issues related to internal security as well as external security. The second phase lasted from 1962 to 1971. It was also the phase wherein, after the failure of Tashkent Agreement, India was criticized by nations like UK and USA, as Pakistan was a great ally of USA, and it was also the moment wherein India also started to slightly align with that of USSR. The third phase started from the year 1971 to the year 1991, wherein India focused more on international trade and also was a face of representation to the African nations as well as the South Asian nations. The very next great turmoil to the Indian foreign policy was after the uh, cut down of USSR in the year 1991, wherein the world when it was under unipolar control of USA, India had also started to focus on multi-alignment and also started to make diplomatic relations with with Russia as well as USA. And the next phase was right from 1991 till present, wherein it was more of focusing on where it was more on focusing on the neighborhoods, like neighborhood first policy, look east as well as west policy of India. Talking about some merits about India's foreign policy, India's foreign policy has been appreciated by a huge amount of nations in today's scenario, wherein India has been seen as a face of multi-alignment. We have seen that during the Russia-Ukraine war, India has been maintaining good relations with both the countries. As India first went towards Russia, then after it was then after it went towards Ukraine, and after again a different delegation was sent towards Russia, which was led by NSA Ajit Doval. India also focuses on international peace, wherein we have the example of the recent United Nations General Assembly verdict of Prime Minister Narendra Modi, wherein he mentioned the importance of global peace and integrity amidst the ongoing Time Israel out. Hamas war. Thank Very nice, Harshwardhan. You covered India's foreign policy in 3 minutes, gave an entire historical uh, journey how India from non-alignment to the present level multi-alignment policy we have eventually came through a lot of flexibility. World has taught us how to be in this dynamic world, and India also adapted little bit, shaped. India also carried out the words used by Harshvardhan, like unipolar, multipolar, non-alignment, multi-alignment, the uh, neighborhood uh, concept or extended neighborhood concept. These are all foreign policy related words and terminology. Now India, from like, non-alignment was a policy when we got independence. We never wanted to disturb anyone, nor we wanted to create any impression on anyone, because we just got the freedom from the clutches of colonial rule, British, and we thought that we want to go for development, peace-loving policies, and we will not create problems for others. But suddenly we faced few wars, especially the 62 war, where we got really backstabbing, and thereafter we realized you may not be wanting to have war, but the others are
likely to attack on you. And you should be having good defense, powerful status, economic and military might both, and aggressive stance. If required, you can attack. So this is how the international world works. There is no permanent friend or permanent enemy in the international relations. And perfect example Harshvardhan gave about Russia and Ukraine, how we balanced it out. Even in Israel and the Palestine, we are balancing it out. We are saying to the world, we are with the correct measures. If someone is propagating peace, we are there with them. If someone wants war with no justification, we may object it. This is how India's stand is there, and slowly you may be realizing how India is gaining the status in international arena when it comes to problems between two nations, and world also looking up to us. The only problem is in our neighborhood, something which has happened in the recent past, that is Bangladesh, which is really worrying us. How so close to us something has gone terribly bad, and we could have done something preventively, but maybe we were not prepared, some intelligence failure, maybe we underestimated the problems in Bangladesh, and a good neighbor, a trusted ally, is now in trouble. So it's a very interesting topic when it comes to Indian foreign policy. And India is not showing to the world that we are permanently allied to anyone. We are with flexible modes. We may extend our hands to good partners. We are doing a lot of trade with new countries. After independence, what phases Harshvardhan has narrated out until 1991. Beyond that, we saw US being the biggest power in the world, and we also went for multi-alignment. And this is how world will be little more dynamic hereafter, because the Asian countries, especially China and India, will have upper hand as far as the international politics goes. The erstwhile powerful nations, whether US, Russia, or the European little bit might, which has come down now, and every country, especially upcoming economies, they want to push their agendas, personal interest of nations, and that is how trade is happening in the international scenario. Good, Harshvardhan, you gave a very, very standard lecturate, perfect language, good utilization of time, and the flow was good. Very nice, maintain it. Okay, who is next? Prathamesh? Jay? Jay audible? Yes, sir. Okay, you are ready? Yes, sir. Okay. Harshvardhan, keep time. Harsh, you are keeping time. Yes, sir. Sir, you can start. Okay. Jai Hind and good evening to one and all. Present here. My lecture topic is impact on the of pollution on human health. Today's pollution is a contaminant of our environment through harmful substance and products like air pollution, water pollution, noise pollution, etc. These impacts on human health in numerous ways, like respiratory system causes asthma or lungs cancers, cardiovascular disease. It causes heart attack or strokes, cancer, cancers like lung cancers, liver cancer, kidney cancer, or blood cancers, and the birth defects and infant modulatory mental health issue like anxiety or depression. Statistically, we see 9 out of 10 peoples worldwide breathe polluted year. It is from by World Health Organization, and 1 out of 8 deaths globally attributed to our pollution. Recently, Delhi's air pollution reduced like expectancy by 10 to 15 years.
I suggest solutions for uh, people reduce energy consumptions, use more public transport, plant trees, and support for reforestations for forest department, etc. By the governments, we have to make a law on enforcements, pollutions, invest in renewable energy, and promote to sustainable agriculture. And lastly, I conclude that that pollution poses a significant threats to our human health, and we must act collectively to reduce pollution and protect our environment. Thank you. Okay, Jay. mm, Important topic, very common in group discussion or in lectures. Such topics are very routine and important. Pollution is a big challenge in front of the developing world, because if you see pollution around us is of different kind, whether it is air, water, or now the e-wastage which is coming up, or the biological wastage which is coming up. It has started creating a big problem for all of us, and especially when these cities are developing in haphazard manner where there is no control. You see yesterday's rain in Mumbai and Maharashtra. Mumbai is totally halted because we have got garbages here and there. The drainages are choked up. The water level even covers the roads and railway tracks, and the transport is halted. Who is responsible for this? I think, coming from top, it is the government who has to really plan it well. Then the citizens who need to understand the importance of all those things, where it causes problem to the human health, because Jay's topic was the impact of pollution on human health. Ultimately, in COVID, we witnessed that how important is oxygen, and when the nature is giving us free oxygen, we were cutting down trees. So, can we really think over it? Can we have clean water around us, drinkable water? We may have water, surplus water, but drinkable water is a big question because it is getting contaminated through our industrial waste. All the rivers are contaminated, all the fresh water bodies are not the way they were 50 years back. So, maybe industrialization, the technological development, has really taken us to a new level of life, but the basics, which is good water, good air, we have lost on that. So it is time to think the survival of human beings and other animals also, which is getting into a trouble zone. Jay has recommended few topic points where remedial actions, so those are important. Can we have more trees planted? Forests are the real saviors of the world because it cleans the air, produces more oxygen, takes out the carbon dioxide, and many more things. Maybe we even science is yet to know what are the roles of all the trees, because there are few trees who are giving 24 hours oxygen, and likewise there must be few trees in, especially in dense forests, who may be having many roles we don't know yet. So we have to protect our nature, and in the bargain we will be protected. Otherwise, maybe another 2 to 3 generations down the line, the genes will be very weak. Coming future generations, we may have problems, health problems. You see the number of diseases with which new kids are getting birth, it is increasing because our nutrition value has gone down, our air quality has gone down, our water quality has gone down, which is creating problems for us because our the immunity level is going down. So that's why it is time to think seriously, come together and act upon it. Okay, Jay, good, comparatively a good lecture today, and maintain it. The choice of words, giving points, remedial points were good today. Okay, now from the RIGMS team, who is the first one? Come forward. Okay, Prachiti. Yes, sir. Speak little loudly. Jay, keep time, and try and utilize 3 minutes, Prachiti. Yes, sir.
You can start now. Jai Hind everyone. Myself Prachiti My today's lecture topic is poverty in India. As you know, there is a major problem of poverty in India. Because of poverty, many people are not able to fulfill their needs. So there are many causes of poverty like lack of implementation, lack of housing facilities, population growing, illiteracy, and many more. There are main two reasons of poverty in India that are illiteracy and unemployment. In India, education and population control is done against the is the most powerful weapon against the poverty. The best way to eradicate poverty is to be educated. Today, we can see that many people are celebrating their birthdays. We should not while celebrating we should not waste the money, but by donating some books or food, clothes for poor children, we can help them. So as we will take live example also that sometimes in mess sometimes we are having food, the food is going waste, so we should not waste it because the people are living in the world. Some of the people, poor people, are not getting that much food also. So as to conclude, I would like to say that we should not waste the food, or we should also help the poor people. Thank you. Wait, Pawan, wait. Prachiti, okay, well tried. Topic is important. Generally comes in SSB scenario, poverty, and it may have different kind of heading, whether reasons of poverty or poverty in India, and the implications of poverty or unemployment also can be a topic which is related to it. So, what is the reason for poverty? It is the developmental stage where India still facing this big problem. We got independence, and thereafter, slowly, the below poverty line people are coming up. If you see, known history tells India was the biggest power center in terms of economy, and we may be the richest country in the world. Historians say so. Thereafter, China was a big country and a big, powerful nation in terms of the economy. And then came the colonial powers, British or others. Now it is US and some European countries, Japan. Slowly this cycle is changing. Now China is emerging, India is emerging, Brazil is emerging. These are the upcoming economies. When the nations are coming up, that means the citizens are coming up. When we talk, on one hand, India is going to be a $5 trillion economy. We are almost now $4 trillion economy. We may become the third richest country in the world soon. So what does it indicate? It indicates that the people in that country also will become rich. If I'm not wrong, we are having on one hand the biggest population, and that means proportionately we have biggest billionaires also in the world because our population is so much. But the percentage wise, the ratio is very, very minimal. In 142 crore people, if 100 people are richest people in the 300 Forbes list, still we are not making up because our population is too much to compare with any other small countries, whether Japan or Germany or maybe Britain. So proportionately, or more people are required to rise. And what is the way? Education is the big powerful tool. Technology is helping us now. There are n number of people, students in the developing nations who are first generation millionaires. In 5 to 10 years after leaving their education are becoming millionaires because technology is giving them upper edge. Those who are bright, those who can utilize the technology, those who can give shape to their ideas. You see today, uh, in the world, not only in India, the first generation millionaires and billionaires had no background of money. With the help of their skills, mind power, and the educational journey, they are the richest people, renowned people in today's world. So, if India has to tackle poverty, skill is one thing, education, and when we talk about skill, that is specialization, some kind of thing. Only merely going into schools and thereafter college and completing degree is not the normal thing in today's world. You have to come up with skill, and that skill will give you more money, more power.
Okay, good Prachiti, but 3 minutes you have to understand it. Okay, Pawan, ready? There only Rudraksh keep time. Hey everyone, my name is Pawan from class 11th of India Bank. Therefore, today's lecture, my topic is India and China relation. First point, relation between China and India. China and India have historically maintained peaceful relations for thousands of years of recorded history. But the harmony of their relationship has vanished in the modern times. After the Chinese Communist Party's victory in the Chinese Civil War in 1949, and especially past the annexation of debates of the People's Republic. Second, friendship between China and India. On 1 April 1950, India became the first non-socialist bloc country to establish diplomatic relations 10 minutes. with the republics of China. Although the border conflict 1950 was a setback to bilateral ties, the Prime Minister Rajiv Gandhi, 1988, visit market beginning in the improvement of bilateral relations. My conclusion is India and China have had a complicated relationship since the beginning of the 20th century. Thank you. Okay, Pawan, well tried. This is just a beginning. India China relationship will be a must know topic in today's scenario for any competitive exam. You must be knowing Indo Pak and Indo China because these are must topics where you should know what is the update. Nervousness, Pawan, don't be nervous. Your body language should improve in future lectures. Topic in this topic, if you want to say something, how India and China started in the similar bracket, we got independence in 1950s. We started journey. There is one example when then Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru, when he was dealing with China somewhere in 1952-53, that time we were more developed. There are some indications when we wanted to start airlines between two countries, India and China. That time China had proposed to India, you start first because you are having the capability. That means we had our Indian Airlines, later became Air India, now again coming back to Tata. China did not have the airlines, we had to start first. This was the scenario. But then further down the line in 90s, when Rajiv Gandhi was interacting with China, that time the scenario was totally different. China had become much more powerful. Beijing Olympics was the year where world came to know what is the power of China. Today China has got biggest dams, biggest market capturing. Small countries are almost enslaved. They are giving loans to big companies. Chinese banks are super banks in the world now, competing with the US, and they are reaching out to all corners of the world. So we started journey together. They were forceful, they were aggressive, and that's why they went ahead, but they will have some problems in future. We are slow, but we are systematic. So India and China has lost the trust on borders, in trade, and there is a issue that we cannot trust each other. Ladakh episode we cannot forget. And in 1967 also, after the 62 war, which was the biggest problem for us as far as the trustful friendship goes. Thereafter 67, Nathula incident was there, where there was a small clash. Thereafter, small skirmishes keep happening on the big boundary, right from Arunachal. We have the Arunachal territory, they always keep objecting, and then Ladakh is another area where there is a problem for India and China. The eastern Ladakh and Aksai Chin. Now there one road, one belt, one road initiative (OBOR), which has gone through our Aksai Chin, which is our part, the Pakistan occupied Kashmir, and then reaching out to Pakistan's interior land. India as a nation
We have to have our sovereignty intact, and we will object it, and that is why probably Galwan happened when we started objecting. So there is more to it, but the conclusion is what Pawan was trying to say. India and China has no cordial relations. It will always be a troubled water, at least for few years, till the time the border disputes are resolved. And there is a trade war also, which is still hidden, which is coming up slowly, because US China trade war is visible. India is still not in that list, but slowly we are competing. And lot of things are there where lot of uh, problems will come in future. Now, good Pawan, more confidence in days to come. Keep practicing. Now we'll go to Harshvardhan. Harshvardhan, Yes, sir. just what is expected? Three times now. This time again, you have cracked your NDA. You are now in first year engineering, because as a backup, you are doing your engineering, and I'm sure this time you will be getting through. Last time it was unfortunate part of medical. Otherwise, SSB you were recommended. This time, I'm sure blessings and good wishes are there with you. You will clear that. Uh, these students in RIGMS, we have got NDA batch. Just give how you cracked every time, because in straight every attempt, first, second, third, now you have one or two more eligible chances. How you are cracking the written exam in 5 minutes, if you can just give tips so that the students are getting benefited. Hmm? I'll just Yes, over to you. Go systematic as a student, because they will be able to correlate how exactly one may go wrong, because these are all 11th boys now and girls. Next September is their first eligible chance. In April we will go for trial. So just keep in mind they have almost 1 year in hand. What will be your tips for them? Just go ahead. yes, sir. Sir, in which language should I speak? English or Marathi? You can go English, Hindi mix. Okay, sir. Go in Hindi otherwise. Okay, sir. हाँ तो सबसे पहले I would like to start that the main reason behind which most of the candidates fail in the India exam is that of maths. There are various students who score जिनका स्कोर 400 के ऊपर रहता है मतलब गेट में, पर वो मैथ्स में उनका सेक्शनल कट ऑफ जो 75 मार्क्स रहता है ना, वो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते. तो मैथ्स इज द ओनली थिंग दैट डिसाइड्स योर मोस्ट ऑफ द रिजल्ट ऑफ एनडीए. तो सबसे पहले ना हमारा ये गोल रहना चाहिए कि मैथ्स कुछ भी करके स्ट्रांग होना चाहिए. अब मतलब अगर 75 भी रहा क्राइटेरिया कि तुम्हें 75 के ऊपर लाना है सेक्शनल कट ऑफ के लिए, तो भी हमारा ऐसा गोल रहना चाहिए कि 150 प्लस इज द मिनिमम स्कोर दैट यू हैव टू स्कोर. एंड फॉर गर्ल्स इट इज अ मस्ट बिकॉज हमें भी पता है कि लड़कियों के लिए सीट्स बहुत कम है. बेयरली 30 सीट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग. इस साल एनडीए में कुछ तो भी है ऑलमोस्ट 30 सीट्स. तो फर्स्ट थिंग इज दैट मैथ्स को एकदम अच्छे से करना है. तो इसको करे अच्छे कैसे करना है, तो द मोस्ट बेसिक थिंग इज दैट ऑफ प्रैक्टिस. क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि कल करेंगे मतलब आज थोड़ा सा कम करेंगे, कल ज़्यादा पढ़ाई करेंगे. तो ये जो बिलीफ है ना, ये एट अ पॉइंट हमारी छूट जाती है. मतलब कि तुम एक दो दिन ऐसे करते रहोगे, बाद में छोड़ दोगे फिर प्रिपरेशन. तो तुम्हें क्या करना है, स्टार्टिंग से ही ऐसा रखना है कि स्टार्टिंग से तुम्हारी प्रैक्टिस बेस्ट होनी चाहिए. हर रोज तुम्हें एटलीस्ट कुछ 3 आवर्स 4 आवर्स अपने अपने या फिर आईक्यू के हिसाब से देना चाहिए. अब मैं जो था तो मैं 10 तक मैथ्स में मॉडरेट था, ना बहुत ज़्यादा अच्छा ना बहुत कम. तो मैं मिनिमम 3 आवर्स कुछ देता था, क्योंकि एज कम्पेयर टू 10 सिलेबस मैथ्स का 11th 12th में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हाई हो जाता है. तो फिर तुम्हें वो टैकल के लिए करने के लिए ज़्यादा टाइम भी देना पड़ेगा. तो सबसे पहले प्रैक्टिस है, रोज प्रैक्टिस करना है. जो भी क्लास में सिखाया गया है उसको घर जाके वापस रिवाइज करना है. रिवाइज नहीं करोगे तो एक दो दिन बाद भूल जाओगे, या फिर ऐसा हो जाएगा कि तुमने आज कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा, फिर एक वीक के बाद तुमने सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा. तो एक वीक के बाद सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ने के बाद तुम्हें ऐसा रियलाइज होगा कि अरे हम तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बेसिक्स ही भूल गए. तो ऐसा होने नहीं देना है. तो इसके लिए रिविजन मस्ट है. बहुत लोग जो एक सबसे बड़ी गलती जो करते हैं वो रिवीजन नहीं करते. रिवीजन तब तक नहीं करोगे ना, तब तक वो ऐसा मन में बैठेगा नहीं. और मैथ्स ऐसा एक टॉपिक है जिसमें तुम कनेक्शंस बनाने लगोगे. मतलब कि अगर तुमने देखा कि डिफरेंशिएशन का जो पार्ट है, तो डिफरेंशिएशन में डिफरेंशियल इक्वेशन और अपना पैराबोला इलिप्स ये सब कनेक्टेड है.
तो अगर तुम कनेक्शंस बनाने का ट्राई करोगे या फिर तुम अगर मैट्रिसेस को अगर डिफरेंशिएशन के साथ कनेक्ट करोगे तो तुम्हें कंसेप्ट बहुत और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगे और ज़्यादा क्लैरिटी बनेगी। तो फिर सबसे पहली बात की प्रैक्टिस करनी है, सेकंड की कनेक्शंस बनाने हैं सारे चैप्टर्स में, और थर्ड पार्ट ये है कि अगर तुम्हारी अगर मैथ्स वीक होगी, अगर किसी की रही, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डायरेक्ट एडवांस लेवल के बुक्स को सॉल्व नहीं करना है। सबसे पहले इजी लेवल के बुक्स के सॉल्व करना है। मैंने जो स्टार्ट किया था कि मैंने मैथ्स फॉर एनडीए बोल के एक बुक थी, तो मैंने उससे स्टार्ट किया था। मैंने उससे सारे मेरे बेसिक्स क्लियर कर दिए। मुझे मतलब मैंने जब मेरा अटेम्प्ट था, मतलब सितंबर का अटेम्प्ट था, सितंबर के 3-4 महीने पहले ऑलमोस्ट कुछ मई तक मैंने मेरा पूरा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर दिया था और मैंने एमएफएन पूरी सॉल्व कर दी थी। और अगले 15 दिन में मैंने क्या किया, वापस वही बुक सॉल्व करके देखी कि मेरे ये बस यही देखने के लिए कि मेरे एक्चुअल जो कंसेप्ट है बेसिक्स वो सही में क्लियर हुए है या नहीं। उसके बाद में मैंने क्या किया कि मैंने स्विच किया एक टफर बुक के लिए। मतलब वो टाइम पे मैंने पाथफाइंडर सॉल्व की थी। पाथफाइंडर कंपैरेटिवली एमएफएन जो मैथ्स फॉर इंडिया है उसे थोड़ी टफ है। तो मैंने फिर वो अगले 2-3 महीने में वो सॉल्व की और उसको ही वापस एक बार सॉल्व किया। तो इस टाइप से मैंने बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक गया। और तुम्हारा ऐसा टारगेट होना चाहिए कि मई या फिर जून जून मैक्स टू मैक्स तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। सिलेबस क्लास में नहीं, मैं सिलेबस ये बोल रहा हूँ कि तुम्हारी खुद की प्रिपरेशन उतनी अच्छे से होनी चाहिए कि तुम्हें अगर जून के मंथ में कौन सा भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो तुम एकदम इजीली उसे सॉल्व कर पाओगे। और एक बात मैथ्स के लिए, मतलब मैं मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करूंगा क्योंकि गैट कंपेरेटिवली थोड़ा सभी निकाल देंगे। गैट का पेपर मैथ्स का सब निकाल नहीं पाते हैं। तो गैट मैथ्स में और एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि कौन से भी चैप्टर स्किप नहीं करना है। क्योंकि मैंने क्या गलती की थी, मैंने जो पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला ये जो चैप्टर्स है और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, ये चैप्टर्स मैंने स्किप कर दिए थे। और यही चैप्टर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में आए थे जो यूजुअली आते नहीं थे। तो फिर वो एक प्लस पॉइंट गिरा। उसके बाद में ऐसा भी हुआ कि मेरे जेई और सीईटी के पेपर में यही क्वेश्चंस आए, पैराबोला रिलेटेड ये सब क्वेश्चंस। तो फिर मैं वो भी सॉल्व नहीं कर पाया। बाद में वही क्वेश्चंस तुम्हें बोर्ड्स में भी आएंगे और बोर्ड्स में इन सारे चैप्टर्स का बहुत ज्यादा वेटेज रहता है। तो तुमने ऐसा कुछ ऐसा स्किप नहीं करना है। जो भी चैप्टर दिया जा रहा है, जो भी आता है, सब कुछ करना है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने रिग्रेट्स कैरी कर रहे हो तुम्हें। मतलब बेस्ट वे में बोलूंगा ना एज अ मोटिवेशन कि ऐसा डिसाइड करो कि मुझे 1 साल के बाद में ऐसी लाइफ जीनी है कि जिसमें मुझे कुछ रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे ऐसा लगे कि अगर 1 साल पहले मैंने सही टाइम पे मेहनत कर दी होती तो आज ये मेरे साथ नहीं होता। आज मैं कुछ मेरे दोस्तों के साथ एनडीए में चले जाता, या फिर मैं कोई अच्छे या फिर मैं भी रिकमेंड हो जाता, या फिर कोई अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाता। ऐसा तुम्हारा अप्रोच होना चाहिए। बाकी गैट का अगर बोला जाए, गैट में देखो, गैट में यूजुअली हम बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेट कर देते चीज़ें। गैट में जो इन पर्टिकुलरली साइंस सेक्शन में ऐसा है कि 9th-10th के क्वेश्चंस तो आते हैं। तो हम क्या करते हैं, 9th-10th की डायरेक्ट रेफरेंस बुक्स उठा लेते हैं और उनको पढ़ने लगते हैं। तो वो गलती नहीं करनी है। हमें क्या करना है कि एनसीईआरटी यूज करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी यूपीएससी की बेसिक बुक है। यूपीएससी खुद से बोलती है कि तुम एनसीईआरटी पढ़ो, तो देर मस्ट नॉट बी एनी अदर चांस ऑफ डूइंग एनी अदर बुक्स। तो बेसिक सबसे पहले एनसीईआरटी करना है। उसके बाद में अभी जो रिसेंट ट्रेंड चालू है पेपर्स में वो देखना है। अभी देखना है कि 11th-12th के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तो फिर तुम्हें वो भी सॉल्व करना है। तुम जो बोर्ड्स के प्रिपेयर कर रहे होगे स्कूल में या फिर कॉलेज में, तुम्हें वही कंटिन्यू करना है क्योंकि उसके भी ऑलमोस्ट 50% ऑफ क्वेश्चन आएंगे। मेरे टाइम पे फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट तीनों अटेम्प्ट में 50% क्वेश्चन 11th-12th के आए थे। तो तुम्हें 11th-12th भी करना है। बाद में अगर मैं फिजिक्स, ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स के ऊपर गया, तो उसके अंदर भी द मोस्ट बेसिक बुक इज दैट ऑफ एनसीईआरटी। मैंने क्या किया था, मैं रेफरेंस बुक ज्यादा पढ़ता था और एनसीईआरटी कम पढ़ता था। तो उसके वजह से ना, मतलब एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस आए थे वो मुझसे हुए नहीं। और मेरे तीनों अटेम्प्ट में बस एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस आए। किसी भी रेफरेंस बुक कोई भी कहाँ से भी नहीं आया। बस एनसीईआरटी में जो लाइन लाइन टू लाइन अगर तुमने पढ़ लिया ना, तो उनमें से ही क्वेश्चंस आएंगे। और रही बात करंट अफेयर्स की बेस्ट वे टू प्रिपेयर इज कि मैगजीन पढ़ो और न्यूज़पेपर पढ़ो। इससे क्या होगा, तुम्हें करंट अफेयर्स रिटर्न में ही नहीं, तुम्हें एसएसबी में भी तुम्हें एक ऐसा प्लस पॉइंट देगी। तो और
और एक अच्छी पॉइंट न्यूज़पेपर पढ़ने की ये है कि तुम्हारी इंग्लिश भी अच्छी होगी, क्योंकि अगर तुम इंडियन एक्सप्रेस या फिर द हिंदू पढ़ोगे ना, तो उसके अंदर ऐसे भी कुछ वर्ड्स रहते हैं जो मैं समझ में नहीं आते। और मैंने ऐसा अक्सर देखा है कि जो क्वेश्चंस न्यूज़पेपर, जो वर्ड्स न्यूज़पेपर में आए हैं, वही वर्ड्स पेपर में क्वेश्चंस में भी आए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में। तो तुम्हें वो भी करना है। तो न्यूज़पेपर को ऐसा कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत हमें लगता है कि बहुत कम बताया गया है, पर एक्चुअल में अगर हम इन डेप्थ गए तो उसके मतलब एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये है। और उसके बाद में और एक चीज़ कि तुम्हारी बैकअप जो है ना, बैकअप रेडी रखो। मैं ऐसा डाउट नहीं करता हूँ कि तुम एनडीए क्लियर नहीं कर पाओगे या फिर कुछ भी, मतलब मैं ऐसा, टू बी ऑनेस्ट मैं बोलूँगा कि एनडीए की प्रिपरेशन और उसकी मतलब जो भी प्रोसेस है, बहुत मतलब अनएक्सपेक्टेड है। अब मैं रेकमेंड हो गया पर कॉन्फ्रेंस, रेकमेंड हो गया पर मेडिकल आउट हो गया, बाद में कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। तो ये बहुत ऐसा अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है, तो बैकअप हमेशा रेडी रखना है। मेरा दोस्त था, उसका ऑल इंडिया रैंक वो फर्स्ट अटेम्प्ट में रेकमेंड हो गया, उसका ऑल इंडिया रैंक 399 था। और हर बार ऐसा देखा जाता है कि आर्मी की सीट्स 420 430 तक जाती है, पर इस बार क्या हुआ कि वो जो सीट्स है आर्मी की वो बस 350 तक ही गई। मतलब कंपटीशन इतना बढ़ गया, फर्स्ट प्रेफरेंस आर्मी देने वाले बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो फिर वो मेरिट आउट हो गया, और उसका जो अगला अटेम्प्ट था वो उसका लास्ट अटेम्प्ट था, उसके अंदर वो कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। और उसने क्या किया, उसने जेई सीईटी उसने कुछ भी एग्जाम नहीं दिया, वो बस बोला कि पहले अटेम्प्ट में हो गया तो दूसरे अटेम्प्ट में भी हो ही जाऊंगा। पर वो मतलब वो डिजर्व तो करता था, ऐसा नहीं कि वो डिजर्व नहीं करता था, पर तो भी कर नहीं पाया। तो इसलिए मैं बोलूंगा बैकअप तैयार रखो। और इतना ही मैं बोलूंगा, बाकी तो तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा, जैसे जैसे तुम इम्प्रूव करते जाओगे मैथ्स गैट, तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगेगा। बस भरोसा रखो कि हो जाएगा, और तुम्हें ना गिव अप नहीं करना है। एक साल में ना बहुत कुछ बदल जाता है। मैंने ऐसा नहीं किया था कि मेरा बहुत स्टार्टिंग से पढ़ता था मैंने जो मेरी मेन प्रिपरेशन है ना, वो मैंने फरवरी से स्टार्ट की थी। मतलब मेरा 2023 में सितंबर में अटेम्प्ट था फर्स्ट, और मैंने फरवरी 2023 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी जो मेन। उसके पहले जो था वो मतलब मुझे ही पता नहीं चल रहा था कि मैंने क्या किया है, कैसे प्रिपेयर किया है। जो एक्चुअल प्रिपरेशन है वो फेब से स्टार्ट हुआ। तो ऐसा खुद को डाउट नहीं करना है। अभी भी तुम्हारे पास अगर ऐसा लगता है कि मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, अब आगे क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कुछ बदल सकता है। ऐसे भी बहुत रहते हैं जो 5 6 महीने में क्लियर करते हैं, ऐसे भी रहते हैं जो 3 4 साल से प्रिपेयर करते हैं तो भी क्लियर नहीं कर पाते। तो बस खुद के ऊपर भरोसा रखना है, कंसिस्टेंट रहना है, बाकी सब हो जाएगा। बस इतना ही सर, दैट्स ऑल सर। Good, Harshvardhan. You guided in very very plain and simple language. दो तीन पॉइंट मैं रिपीट करूंगा व्हाट हर्षवर्धन हैज सेड. फर्स्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस, रिवीजन, सॉल्विंग द इजी क्वेश्चंस, फिर उसके बाद थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन, कोई एक चैप्टर हो गया है उसके बाद दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ऐसा तो नहीं हम पहला चैप्टर भूल गए। ये सब जो प्रैक्टिकली चीज़ें महसूस होंगी आपको भी, तो आपने ये ध्यान देना है कि ये बिल्कुल एक विद्यार्थी एक दूसरे विद्यार्थी को बता सकता है, इतनी प्लेन लैंग्वेज में उसने समझा दिया। सो यू मस्ट प्रैक्टिस मोर एंड मोर। जब भी टाइम मिलता है कुछ ना कुछ सॉल्व करो, टारगेटेड रहो कि आज 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस चैप्टर का, ये चैप्टर मेरा अभी अच्छा हो रहा है, और उसको फिर 1 1.5 महीने बाद कहीं टच करके देखो। ये प्रैक्टिस साइकिल छोड़नी नहीं है। दूसरा, गैट के बारे में भी उसने अच्छा बताया कि हाउ यू मेक मिस्टेक्स। एनसीईआरटी की जो बुक्स है वही बेसिक्स है, ज़्यादा कंफ्यूज होना नहीं है। तो एनसीईआरटी की बुक्स को रेफ़र करेंगे, या देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शॉर्टकट नहीं होते, थोड़ी मेहनत करोगे तो आप बिल्कुल चांस बढ़ जाता है आपका क्लियर होने का। एक अच्छा एग्जाम्पल उसने दिया उसके दोस्त का, विच वी मस्ट लर्न एक्चुअली, बैकअप प्लान। क्योंकि ये मैं भी हमेशा बोलता हूँ आपको, 4 स्टेजेस में सिलेक्शन है। फर्स्ट स्टेज रिटर्न है, फिर इंटरव्यू है, फिर मेडिकल है, फिर एक मेरिट लिस्ट भी बनती है। यू नेवर नो, अभी उसके दोस्त का मेरिट लिस्ट में वो आउट हुआ, तो इमेजिन करिए कि हाउ पेनफुल इट इज़ टू एक्सेप्ट दिस। एंड उसके बाद बैकअप प्लान नहीं है तो इंजीनियरिंग नहीं, कुछ नहीं, फिर क्या करोगे। हर्षवर्धन का एक बैकअप प्लान था, दैट्स वाई इज इन गुड प्लेस नाउ डूइंग इंजीनियरिंग। बट एनडीए का चांस चल रहा है, एंड आई एम श्योर विथ आर बेस्ट विशेष दिस टाइम ही विल गेट थ्रू। मेडिकल का जो इशू था वो भी अब हो गया ऑलमोस्ट, तो आई थिंक ही विल गेट थ्रू। बट
बैकअप प्लान जो एक बार बार उसने भी बोला, एंड दिस इज अ प्रैक्टिकल सेंस ऑल्सो, कि आप गलतफहमी में नहीं रह सकते कि मेरा एक ही प्लान है और मेरा यही होगा। ऐसा नहीं होता है लाइफ में। ऑलवेज देयर हैज़ टू बी रिडंडेंसी। फौज में जाओगे तो वहाँ पे भी सिखाया जाएगा, कोई एक चीज़ पे भरोसे पे हम लड़ाई में जा नहीं सकते हैं, हमेशा बैकअप रहेगा। हमेशा बड़ी पेयर में ऑपरेट होते हैं, हमेशा हर जगह पे दो चीज़ें दिखेगी आपको। वैसे ही आपकी एनडीए के साथ सीईटी या जेई या कुछ भी, आपका बैकअप प्लान ज़रूरी है। तो आई थिंक थोड़ा उससे फ़ायदा ही होगा आपको, हर्षवर्धन की जो टिप्स अभी मिली। हर्षवर्धन ने टिप्स देना मतलब वो एक तरह से क्लोजर टू रियलिटी, बिकॉज वो थर्ड टाइम अभी रिटर्न क्लियर कर चुका है और इजीली कर रहा है। पहली बार में थोड़ा स्कोर लो था, उसने मिस्टेक्स भी बताई और स्कोर बढ़ते जा रहा है। तो दैट मीन्स एक सक्सेसफुल कैंडिडेट का कुछ तो सुनना चाहिए हमने, इसीलिए उसी मकसद से उससे हमने अभी सुना। Thank you, Harshvardhan, and all the best. Harshvardhan, all the best for your SSB. I'm sure you will crack it and you will go through medical Yes, sir. also, and you will be joining NDA in coming batch. Thank you. Bye. Jai Hind. Yes, sir. Thank you, sir. Jai Hind, sir. Jai Hind, sir.